One is auto login tool. Third one is simple email service using Google SMTP. Now, before moving forward, I want to ask a simple question from audience that अगर हम कुछ ऐसा बनाए, हम कुछ अगर ऐसा बनाते हैं जिससे हम अपने यूजर नेम और पासवर्ड को पहले से सेव कर ले और जिससे हम वापस से उस साइट पे रिविजिट करें तो वो अपने आप खुल जाए, तो don't you think it's a interesting project? And another, take an example like you are a student of BTech and you have to apply so much, you have to apply your CV in so much companies. तो आप मैन्युअली एक एक जाके एक एक कंपनी में अप्लाई करोगे तो don't you think it's a time consuming process? So आज इन्हीं चीजों को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे और इन चीजों को कैसे रिजॉल्व करें ये देखने वाले हैं. Now, firstly, we are going to discuss digital marketing tool. Now, first of all, we should know the meaning of digital marketing tool. Now देखिए, आपने कुछ क्वेरी लिखी गूगल के ऊपर या आपने कुछ क्वेरी लिखी तो उस स्पेसिफिक क्वेरी से रिलेटेड जितने भी डेटा है वो सारे आप चाहते हो कि एक साथ एक्सट्रैक्टेड होकर एक फॉर्म में आ जाए. मतलब आपको हर एक वेबसाइट पे जाके उस चीज को ढूंढना ना पड़े, आपका जो टाइम है वो आपको बचे. तो आप इस वाले मेथड को फॉलो कर सकते हो. इसमें दिया क्या है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. डेटा एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ पुलिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्जर सोर्स सच एज एन डॉक्यूमेंट और डेटाबेस. Many online companies rely on automatic data extraction tool to pull images, product listening, and other helpful information from website for easier management and storage. In simple words, it is saying that जो data extraction है ना, वो डेटाबेस में से आपने जो स्पेसिफिक कीवर्ड दे रखा है उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें, जितने भी चीजें गूगल के ऊपर है जो आपके से रिलेवेंट है आपके इंफॉर्मेशन से, वो दे देती है. Now, data extraction can be a time consuming project if done manually. या ये सही बात है. अगर हम मैन्युअली चीजों को चेक करें, मैंने पाइथन लिख दिया और पाइथन लिखने के बाद मेरे पास जितने भी रिलेवेंट क्वेरीज है वो सारी आ गई, तो डोंट यू थिंक इट्स अ टू मच टाइम कंज्यूमिंग हर एक वेबसाइट पे जाके उस चीज को पढ़ना, उस चीज पे काम करना. तो इसी चीज को रिजॉल्व हमारा ये टूल कर देता है. Data extraction is a multi-step process that involves searching for relevant information within a target data. Once you find the current information in your source data, it can be exported to a desired format. मतलब जो आपका ये टूल है, आपने कोई कीवर्ड टाइप किया, वो आपके स्पेसिफिक फॉर्मेट में देगा. आपको एक्सेल शीट में दे सकता है, अगर आप चाहो तो एमएस के वर्ड में दे सकते हो. वो आप पे डिपेंड करता है आप किस फॉर्म में उसको लेना चाहते हो. Data extraction tool can in handy when extracting information from text documents such as PDF or Word documents, spreadsheet like Excel or CSV web pages that contain the data you are looking for. जैसे मैंने कहा ये पॉइंट वही स्टेट कर रहा है आपको. Now, second topic is auto logging tool. In this present scenario, every website uses authentication and we have to log in by entering proper credential, but sometimes it becomes very hectic to log in again to a particular website. So to come out this problem, let's build our own auto login bot using Python. Basically इस टूल में हुआ क्या है, आपको मान लो कि एक वेबसाइट है जो आपको री लॉग इन करनी है बार बार. मतलब आपको कुछ कोर्सेज करना, जैसे यूडीमी में कोर्स ले लेते हैं, आपको बार बार उस डिटेल को फिल नहीं कर सकते. पहला ऑप्शन ये होगा आप सेव कर लो पासवर्ड वगैरह को, जिससे आपको बार बार री लॉग इन ना करना पड़े. दूसरा ये है कि आप इस टूल को यूज कर लो, जिससे आप सिर्फ इस टूल को ओपन करोगे तो ये अपने आप आपके लिए ऑटोमेटिक वो सभी आपके वेबसाइट आपके यूजर नेम के साथ, आपके पासवर्ड के साथ ओपन कर देगा. आपको डायरेक्टली वो कोर्स पेज पे ले जाएगा और कोर्स पेज आप एक्सेस कर सकते हो. इसमें आप थोड़ा लॉगिन और थोड़ी चीज और एडअप कर सकते हो. आप चाहते हो जो आप कोर्स कर रहे हो आप उसकी प्लेलिस्ट डायरेक्ट खुल जाए, तो कुछ मॉडिफाई करके इस टूल के अंदर आप उसको भी अचीव कर सकते हो. बेसिकली इसको अचीव करने के लिए आपको एक मॉड्यूल डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम सेलेनियम होता है. We will be using Selenium Python library for making the auto login bot. Python Selenium library help us to access all functionality of Selenium WebDriver like Firefox, Chrome, and Remote. Now, third one project is simple email service using Google Gmail SMTP. इसके अंदर बेसिकली आपको कंपनी के लिए रिज्यूमे अप्लाई करना है. आपके पास हंड्रेड्स ऑफ लिस्ट है, आप हंड्रेड्स ऑफ लिस्ट पे आप हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज पे अप्लाई करना है. आप एक एक करके करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. मतलब आपको पता है कि मुझे यही सीवी सारी की सारी कंपनी में देनी है, बट एक एक करके आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा और आप शायद जब तक टाइम भी निकल जाए
उसके एप्लीकेशन का। तो उस चीज से बचने के लिए आप इस वाले टूल को यूज कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर होगा क्या, आपको गूगल के लेस सिक्योरेंस को ऑफ करना पड़ेगा और आपको एक बार एक मेल लिखनी पड़ेगी। उस मेल के अंदर आप अपने पीडीएफ, अपने सीवी को लिंक करके आप हर सभी के सभी वेबसाइट भेज सकते हो, जिससे जो वहां पर दूसरे साइट एचआर वगैरह को आपकी सीवी तुरंत मिल जाएगी। और ये करना कैसे, इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। Here we are going to send the mail from Gmail using Python. First of all, SMTP lib library है Python का needs to be imported. After that, create a session. We will be using it instant SMTP to encapsulate an SMTP connection. Connection establish करना पड़ेगा. In this, you need to pass the first parameter of server location and the second parameter port to use. For Gmail, we use port 587. Gmail का अपना port number होता है. For security reason, now put the SMTP connection in TLS mode. TLS means transport layer security, encrypts all the SMTP commands. After that, for security and authentication, you need to pass your Gmail account credential in the login instance. The compiler will show an authentication error if you are enter invalid email or password. मतलब आपको अपना email ID देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा जिस email ID से आप भेजना चाहते हो। No. Last step, store the message you need to send in a variable say message using the send mail instance. Send your message. Send mail uses 3 parameters: send mail ID, receive mail ID, and message to be sent. The parameter need to be same. The parameter needs to be in the same sequence. बेसिकली इसके अंदर मैसेजेस आपको पास करने पड़ेंगे कि सर आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज एंड आई वांट टू नो योर कंपनी एंड आई वांट टू गेट सम, आई वांट टू गेट सम अपॉर्चुनिटी। तो इसमें आपको जो भी मैसेज लिखना है, जो भी वो कंपनी में भेजनी है, तो उस चीज को आप इस मैसेज के अंदर आप एक बार सेंड करोगे तो सबके सभी कंपनी के पास वो चीजें पहुंच जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू शो माय डेमोन्स्ट्रेशन। It is a auto login app. You can clearly see that here is email ID and here will be my password. Now see. ये आपका वेबसाइट ओपन हो गया, आप यहाँ से कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। नाउ ये आपका एक डेमोन्स्ट्रेशन था, बाकी 2 डेमोन्स्ट्रेशन आप देखना चाहते हो तो इस वेबसाइट पे विजिट करके आप देख सकते हो। बाकी दोनों डेमोन्स्ट्रेशन इस लिंक पे अवेलेबल है। At last, I want to say thank you for listening, and I want to get some feedback from you guys. Thank you. ठीक है अनीश, सो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, जस्ट दैट एक चीज अपडेट करना पड़ेगा कि you cannot see the slide and speak what is written on it. That is not done. Okay. ठीक है, वो चीज अपडेट करनी पड़ेगी। आपका स्पीच अलग है और there cannot be too much text content on the slide. It should be only in points. ठीक है, Sure, what sir. you need to discuss needs to be told by, you need to speak, okay, instead of keeping all your speech on the PPT. That cannot be done. Otherwise everything looks good. ठीक है, प्रेजेंटेशन का भी आपका आइडिया अच्छा था कि आपने वीडियो अलाउ कर दी, डिस्प्ले कर दिया, एंड लिंक भी आपने शेयर किया. कीप दिस PPT and link shared on common board in the progress update so that anybody who wants to refer can refer it. Okay. Sure, sir. So the video of the tool and the link as well as the PPT for reference, you can share it. It is a good practice. Otherwise you have everything as in जो required है. So I'm just sharing my screen and I'm just showing your scores. So कुछ तो मैंने पहले से ही मार्क कर दिए हैं आपके, जो मैंने starting में evaluate कर लिया. Hook was fine because you started with a way that I want to ask a question and you wanted user interaction, so it was good.
ठीक है, तो हुक स्टोरी इज फाइन, इट्स गुड, पीपीटी इज गुड, ठीक है, पीपीटी ठीक है, मतलब देर आर ऑप्टिमाइजेशंस इन इट, इमेजेस नीड्स टू बी गुड, ठीक है, इमेजेस नीड्स टू बी एट अ प्रॉपर प्लेस। आपने एक लॉगिन वाले में एकदम कॉर्नर टॉप पे एक फोटो लगा रखा है, बीच में सारा टेक्स्ट भर दिया, तो इट डजंट लुक गुड, बट चलो एनीवेज, समथिंग बेटर देन नथिंग, ठीक है। Yeah. और थोड़ा पिछली प्रेजेंटेशन, हिता की प्रेजेंटेशन के रेफरेंस में भी आपकी फिर भी ठीक लग रही थी, तो थोड़े एडेड पॉइंट्स आपको उसके भी मिल गए हैं, ठीक है, तो बेटर आपने सेकंड प्रेजेंट किया, सो ये ठीक है। क्यूए स्लाइड है आपके उसमें, गुड, ठीक है। कॉन्टैक्ट रेफरेंस लिंक्स भी आपने ऐड किए स्लाइड के अंदर, दैट इज ऑल्सो गुड। डेमो भी आपने वीडियो में दिखा दिया, यू सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ पीपल एंड, ठीक है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी दे दी वॉइस वर्बली भी, ठीक है, तो दिस वाज आल्सो गुड, इट वाज गुड। बाकी आपका कैमरा वाज वर्किंग फाइन, माइक्रोफोन भी आपका ठीक से चल रहा था, बैकग्राउंड इज आल्सो गुड, तो ऑल टुगेदर इट वाज अ गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है, गुड प्रेजेंटेशन, कीप इट अप, ठीक है। थोड़े बहुत अपडेट्स करने पड़ेंगे, जैसे कि कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा कि यू वर स्पीकिंग करेक्टली, बट जस्ट दैट यू वर वॉचिंग एंड स्पीकिंग, यू वर Yeah. द पीपीटी एंड स्पीकिंग, दैट नीड्स टू बी अपडेटेड, इसे अपडेट कर लो। बाकी लैंग्वेज इज नो बार, इफ यू वर स्पीकिंग इन हिंदी दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, you should be comfortable in the language you want to Yes, sir. speak, so that is fine. And I have marked your presentation, the score is sent on your email also, it's also with me, so बाकी हम evaluate करेंगे probation के time पे, सारे scores जुड़ते जाएंगे, we'll give you the weekly and monthly report, so this is good. Secondly, जो task आपको भी करना है, आपको भी जो मैंने presentation दिया है, सुयश एंड अनीश, आपको मैं सेम प्रोजेक्ट दूंगा, ठीक है। आप लोगों को जैंगो का फ्रेमवर्क गो थ्रू करना है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आपको डॉकर इम्प्लीमेंटेशन करनी है विद द रेफरेंस बुक, मैंने बुक भी शेयर कर दिया, ताकि आपके फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांगली रेडी हो जाएं, ठीक है। और प्रोजेक्ट फिर सोर्स कोड्स में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, विल गिव यू द प्रोजेक्ट, वी हैव द वीडियो प्लेलिस्ट आल्सो, बट इंस्टेड आई थॉट कि वो प्लेलिस्ट देखने से बेटर ये है कि गो थ्रू विद द फंडामेंटल नॉलेज एज ऑफ नाउ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बुक वाइज प्रोफेशनली क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है इन अ स्टैंडर्ड वे, गेट थ्रू इट एंड देन वर्क आउट ऑन द प्रोजेक्ट। तो एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो और उसके बाद में फिर देन यू विल बी एबल टू बिल्ड इट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। तो अभी 1 Sure, sir. दिसंबर आपका है, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर, बीच में आपने हॉलीडेज वगैरह भी लिए थे, ठीक है। तो ये वाला टास्क जब आप करोगे तो मैं आपका प्रोबेशन कंप्लीट मान लूंगा, जो अभी मैंने आपको टास्क दिया है, ठीक है। Sure, sir. तो अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग गुड, सो आप इसको फॉलो कर लो। टास्क भी मैं आपका अलॉट कर ही देता हूँ, ठीक है। मैं अभी अलॉट करके आपको फिर मेल कर दूंगा, ठीक है। अभी स्कोर मैंने आपको Sure, sir. दिया है, मैं अभी एक पूरा एक वेल क्यूरेटेड कमेंट बनाऊंगा टास्क रेफरेंस के साथ में, वीडियो रेफरेंसेस, पीडीएफ रेफरेंसेस, सुयश को और अनीश को, आप दोनों को मैं टैग करूंगा, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फ्रॉम टुडे, Sure, sir. Sure. ठीक है। चलो, ऑल द Thank you, बेस्ट, sir. वेरी नाइस, गुड। Okay, guys, now I'm moving on to, there were certain assigned new tasks, people are here. Ashok Kumar, Meena, the names which I'm taking, please raise your hands. Ashok, Meena, Sainath, Ramesh, Neeraj Somwani, Ketan Urkudkar, Piyush Arun Batgujar, all of these 16 January batch people. अभी से आपको टास्क अलॉटमेंट की क्या जरूरत पड़ गई, आपके तो ऑलरेडी टास्क फंडामेंटल्स अलॉटेड होंगे। यस पीयूष, please turn your cam on, let me know. Hello. Hi Piyush. Hello, sir. I have joined this batch on the 25th of January, Okay. but I didn't get what really I have to do, or any task or courses or what. Just give me a minute. Piyush Arun Bhatgujar, you are in full stack web development, 16th Yes, January. sir. Okay, let me add you to the board.
ठीक है, so I'm adding you to web developer group. Yes, sir. This is going to be a group in which you will get the tasks and you have to upload your tasks. Okay. Okay. So you will receive an invite from Trello on your email. Okay. I've sent the invite for this group, web developer group. Okay. You have to go to this web developer group. And Yes. in this is the task 1, which needs to be done. Okay. I'm sharing the link of the task 1 to you. Okay. 19th January. For the people of 16th January batch, we have allotted this task. Okay. So what you have to do, you have to follow this playlist and you have to watch, implement and demonstrate the following tasks as mentioned. Okay. In the playlist, you have to go through it and implement it and submit it regularly. Okay. Also, Okay, sir. Okay. your team leader is @Yashchandra Upadhyay. You can tag him in case if you are facing any technical queries, you can tag him and we will help you with the solution on this Trello card itself. Okay. So I'm sharing Okay. the link of this comment on the chat so that you can directly go through it. Okay. This is, okay. Let me just send it to Piyush. This is the task link. Okay. I have sent it on chat. Please get it. And this is the card on which you have to progress, update, and technical queries card. Okay, this is the card on which you have to update your progress. So I'm going to mark your attendance active, and from now on, you are going to get emails related to progress updates. So go through with the progress update email. What is the protocol? If it is a general update and general query, post it on Trello. And if it is a new task allotment or presentation, then you can click on task allotment and presentation and you can join this meeting. Otherwise, depending on the progress which you will be marking on this card, okay, we will mark your attendance. Okay. Yes. Thank you, sir. Right. So let me just mark your attendance for today. But from the next meeting, it is not necessary to join this meeting until and unless you need a new task. Okay. Your previous task is done. You will be showing presentation and after that I can allot you the next task. Okay. So you have to follow through the emails and you are going to receive a progress update email. And I will attach, a video also so as to understand how things works. Let me just share the video with you. Yeah, here is the meeting. Go through with the protocol for minutes. Okay, here is the meet. You can follow this. Okay, sir. Okay. Yes. Okay. Moving on to anyone else from this group? Ketan, Neeraj, Sainath, Ramesh, Ashok Kumar, Meena. Chalo. All the people with general queries can raise their hands and I can take your queries one by one. Up to 9 PM. Yes, yes. Yes, sir. So I have a query. See, there was an intern सूरज जाधव जिसके बारे में मैंने बोला था तो सूरज मैंने आज मैंने उसको भी आज टास्क असाइन किया उसने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि उसको टास्क चाहिए ठीक है वो फर्स्ट वेब का था उसने बोला आज से मेरा स्टार्ट कर दो तो आप उसका भी एक्टिव कर दीजिए प्लीज हाँ just a minute. So 6. सूरज यस सूरज जाधव ठीक है Yeah. मार्क देम एक्टिव 1st February यस सर ठीक है ठीक है मैंने मार्क कर दिया एक्टिव एंड नेक्स्ट इज फॉर टीएम डाइट सर आपने मुझे वो माइस्क्वेल के लिए उनको असिस्ट करने के लिए बोला था हाँ मैंने वो टेबल क्रिएट किया है बट वो लोग पूछ रहे डिप्लॉयमेंट का तो डिप्लॉयमेंट कहाँ पे करना है 000 वेब हाउस पे कर लो अभी सैंपल
ठीक है, सैंपल करके उनको उसका यूजर लॉगिन भेज देता हूँ। अब एक हाँ बार ये टेबल चेक कर लो ना, वो सही है कि नहीं स्कीमा। दिखा दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, माय स्क्रीन इज शेयर्ड। या स्क्रीन शेयर। So we have this sample data. First, there is a name, and then there are ingredients, and then instruction. So this is how I'm planning to create a schema. There will be one table for the dishes where there will be the ID 0 and 1. And later I checked that there was also a group. So all the dishes were, there were in some group. So there was one group and then there were multiple recipes. So in the deployment, I have like created another table for the another column for the group. And then I have created for the ingredient, and there this dish ID will referencing to this dish table ID, and same for the instruction. राइट, ठीक है। And I have created this recording for test deployment on localhost. That's great, that's great. And Adi, Web Aditya services, Mathur asking, yeah. web services, who is writing web services? No one is currently writing web services. I just created this sample web services for this to like just if the, check if the MySQL connection is working or not. अच्छा, But there are two people you told me to give the names. So that is Jha Bhavna and the Ganesh. So Jha Bhavna और गणेश का दोनों का ये हो गया है, टास्क 1 हो गया है, बट दोनों का रिस्पॉन्सिवनेस का एरर आ रहा है, रिस्पॉन्सिव नहीं बन रहा उनका वेबसाइट। ठीक है। मैंने जहा भावना का ये टेस्ट किया है बट उसका रिस्पॉन्सिव नहीं आ रहा है, मेरे से भी नहीं हो रहा। हम लोगों ने ये बूटस्ट्रैप से भी ट्राई किया। ठीक है, और गणेश ने जो है उसने रिस्पॉन्सिव का ट्राई किया है बट उसने ओवरफ्लो वाई किया तो उसका स्क्रोल बार आ गया है, तो वैसा आ रहा है। उन दोनों ने पोस्ट किया है ट्रेलो पे। स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल आ रहा है या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल आ रहा है, उसने ओवरफ्लो वाई लिया है, स्क्रोल कर दिया है प्रॉपर्टी में। अच्छा, तो या आस्क हिम टू फिक्स इट, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो स्क्रॉल बार का कोई मतलब ही नहीं है। सब बट उसको फिर पूछना पड़ेगा, उसको ये डालना पड़ेगा ट्रेलो के अंदर, ये वो मीटिंग नहीं ज्वाइन किया, उसको ट्रेलो में अपडेट डालना पड़ेगा। राइट राइट, आस्क हिम टू या अपडेट इट ऑन। ओके सर। और जहाँ भावना का सर नहीं हो रहा है, ये मैंने ना बूटस्ट्रैप से भी किया। ठीक है, या नहीं बट इसका नहीं हो रहा। स्पेसिफिक डिजाइन नहीं हो रही है तो यू कैन लीव इट, उसमें हम अपना ओके, टाइम नहीं लगा सकते हैं। या ठीक है, ये कोई सर क्योंकि मैंने एक्चुअली ये भी किया, फिग्मा से भी चेंज करके देखा तो भी हाँ, नहीं हुआ। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं होगा, कोई चीज नहीं होने वाली तो कोई चीज ही नहीं है। जस्ट दैट आई विल जस्ट शो यू द अप्रोच क्या है। कोई नहीं, आप इन दोनों के अगर ये फंडामेंटल टास्क कर चुके हैं, आस्क देम टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट दे हैव डन। ठीक है, I एंड believe this आस्क is देम टू Ganesh. वर्क। Yeah, so this is the deployment for Ganesh. So this is how it's look. ठीक है, ठीक And है, भावना आई बिलीव वो मीटिंग में है, वो शो कर दी, उसका मेरे पास ये नहीं है URL। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ठीक है, इट इज फाइन। या आस्क देम कि दे कैन क्रिएट द वेब सर्विस फॉर टीएम डाइट। या और मैंने भावना का ये किया था, ट्राई किया था, तो भावना का ये आ रहा है एक्चुअली ऐसा। ओके, सॉरी ये मेरा वाला एक्चुअली। या सो उसको दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने ये भी किया है, उसने ना, मैंने वीडियो बना के दिया था तो उसने ये किया था, पोस्ट किया था। अब उसको चेक कर लो ना बाद में। हाँ मैं करूंगा, अभी सीक्वेंस में मैं कर रहा हूँ चेक। या एंड नेक्स्ट आर यस, कुर्बा गोवर्धन का सर नहीं हो रहा है WSL का। सूरज सौरभ से भी नहीं हुआ और हम लोगों ने किया था वो भी नहीं हुआ, तो उसको कनेक्ट करना है मैम से। हाँ तो नेहा को आप टैग करके मैसेज डाल दो एंड कनेक्ट विद हर। और सर ये टैग नहीं हो रहा है बट उनका टेलो हैंडल क्या था? एट नेहा अंडरस्कोर 1234। नेहा, हाँ okay, यही है, okay, then I will tag her and राइट। yeah, so that's it उनके from my साथ side. शेड्यूल करा दो सो शी कैन कनेक्ट एंड चेक बैक। Okay sir. राइट, Yeah. ठीक है। ऑल्सो आपका स्टाइपेंड्स में आज क्लियर करूंगा अभी, ठीक है? Okay sir. I'll get it done. Yes sir. Thank you sir. Right. Thank you. Okay. So guys,
I'm moving to Shamla. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, please tell me. So the problem was that on 26th, I received an email regarding that, saying that my attendance on 25th was marked absent. But on Trello, I have given my progress card. So I've attached a snapshot of that same, and I've mailed back on the same email. And for 27th, I didn't receive any email say on the my attendance. So I want to ask whether my attendance was marked or not. So attendance are only marked between Tuesday to Friday, okay? Not on Saturday, Sunday, and Monday, and not on public holidays. So on 25th, but my issue. So 25th at 7:20 p.m. I'm at the night itself I've marked it, and on 27th at 7:15 or 7:20 I've reported it. After talking to yes sir, I've marked it in the Trello card. no problem, no problem. You can ignore that email. We'll get it updated at the back end. Not an issue. Sir, and today I've also marked my progress, and after that I saw a issue with my button in the website, the doctor appointment. All the things are done according to the CSS. The button is also been changed, but the only thing is when I click the button, it is not showing any movement. I have also attached the same video of it on the Trello card, progress card. So can you just verify it and can you give me a feedback so that I can make the changes today or tomorrow, and also add the about and next pages that need to be done. Right, right. Yes, please look into her, feedback and Yes, get it sir. updated on Trello. Yes, sir. Actually, I was helping some other people, the Pratyush, and there were some people who was having some trouble with 000. I helped them, so I didn't look into her issue. I will look into it. Sure, sure. He'll look into your issue and get it sorted today. And sir, the Pratyush error is solved. There was some error with the file uploading 00 host. So what we had to do was we had to create a VPN and in the Opera and then create new account and do it. And another intern also got it fixed with the same method. That's great. Can you record a solution and post it in the facts so that anyway, next if the people gets any trouble, they'll be able to sort it. Okay, sir, I will record a video and post it. Right, right. Thank you. Okay. Shamla, I have marked your attendance for the day. Rest, we'll get it checked in the backend for 25th. And you might not get an updated mail for 25th now, but we'll get it checked in the record. And Yash will look into your question for the day. Hitha. Sir, I had updated Ankush about my errors that in that mouse hacking, the Wi-Fi mouse hacking. He told the Wi-Fi mouse hacker app is patched and he will let you know, and he didn't update me after that. So I want to know what is the update. If so, I have got no update on it as of now. But if it is patched, that is not a problem. You can move out to task next. And I think it is already on your board. Just do let me know. Just let me check. Cyber security board. You can continue proceeding with task number 2. The task 2 is here. Software cracking part. This one you can do. Okay, so I'll do it. Okay. But your task 1 is still not complete, it was meaningless what you presented today. And I'm not really sure if you really understand the concept of reverse shell
yet. Sir, should I Allotting present for the it sake of once again? allot. I'm just allotting the task for the sake of allotment, but I'm not happy with the presentation, as well as I don't find whether the task is done. So I need you to prepare a second presentation, work out on the concept, but I'm allotting you task 2 as well. Okay. So both ways I'm doing, but you have to get the task 1 implemented and show me again. Yes, sir. What's your name? Hedha. Okay, so deadline for this one would be 5th Feb 2023. Also, I think I have marked it here at Hita Vijay Kumar, so I think you will be able to access it here. Let me just Hita. Here is the link. Okay, Palak Jha. Yes, sir. Good evening, sir. Good I'm evening. from Cloud Computing Group, and that day I posted my doubt on Trello board about EC2 spot instance pricing. Yeah. Yeah, so I saw that they are charging of a per hour charges are, I think, 1 point something dollars. So it would be like around 80 rupees per hour, and I'm using my mom's card, so I need to be a little bit careful, like if I forget to stop the Test it, record it, and stop the instance. Not a problem. till now I have completed till like I have created this the instance EC2 instance, and I was able to access the EC2 instance perfectly, and I have posted the video regarding that on Trello card. Okay. So is it necessary to launch the spot instance? Yeah, it won't charge you. It can be counted in the free credits. That won't be a problem. Somehow 12,000 rupees free credits are given for the first user when you register it for the first time. So Okay. it won't be a problem. You create a spot instance and get it recorded, and then stop and delete the instances. Your card won't be charged. Okay. So, sir, is there any videos that I can refer to the The video? spot instance workshop is the best resource we have, because it is a resource directly from Amazon, and it is the best implementation. Okay. So I don't want you to refer any video. There are certain videos from AWS blogs, but they are, presentation videos. It's not a practical workshop. So following this workshop, following this resource is the best way to go with. Okay, sir. I'll try with it, and in case I have any doubt, I'll post. Sure. Thank you, sir. Right. Aditya? Yes, sir. Good evening, sir. Yes, Aditya. Sir, what is the new task we have to do? As of now, whole task is completed. क्या टास्क किया आपने अभी? आपको तो डाइट सर्च की एप्लीकेशन बनानी थी. Yes, sir. तो डेटाबेस का आपने कहा था.
तो वो यस यस से बात हो गई थी, तो उसने बेसिकली कर दिया था वो। तो आपकी ऐप फंक्शन हो गई, डेमोन्स्ट्रेट कर दो। नहीं सर, अभी वो सब तो नहीं हुआ। तो फिर टास्क तो आपका ऐप क्रिएट करना है ना। एंड्रॉइड डेवलपर हो, एंड्रॉइड की ऐप बनाओगे ना। क्या टास्क है आपका? अच्छा, दूसरे ने डेटाबेस बना दिया तो आपकी ऐप बन गई। व्हाट नहीं अ सर, वियर्ड, व्हाट अ वर्स्ट वियर्ड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। नहीं सर, वही पूछना था क्रिएटेड अ सर। डाउट इन माय माइंड कि मेरे को आपका प्रोबेशन कंप्लीट करना भी चाहिए या नहीं। तो बहुत ही गंदा सवाल पूछा है आपने। नहीं सर, वो क्योंकि इतना आपने बोला वाहियात था ना। सवाल तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुना। क्या टास्क आपने किया टास्क 2 में, मेरे को बताओगे एक बार? सर वो आपने डेटाबेस का कहा था कि एक बार डेटाबेस करके बताना मेरे को, फिर मैंने आपको ट्रेलो पे अपडेट किया था, तो आपने बोला इसको होस्ट करके बताना मेरे को, मैं चेक करूंगा।